अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सलीम और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं जो बेसिकली जिसका नाम है के मीन्स क्लस्टरिंग। तो हम देखेंगे कि आखिर के मीन्स क्लस्टरिंग क्या चीज़ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे पाइथन के अंदर। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we are going to discuss k-means clustering in Python. So let's start. So discuss from machine learning. Basically, machine learning is a discipline of artificial intelligence that provides machine with the ability to automatically learn from data and past experience while identifying patterns to make prediction with minimal human intervention. Machine learning is broadly divided into three categories: supervised learning, reinforcement learning, and unsupervised learning. Supervised machine learning. This type of machine learning involves supervision, where machines are trained on the labeled datasets and enabled to predict outputs based on the provided training. The labeled dataset specifies that some input and output parameters are already mapped, hence the machine is trained with the input and corresponding output. Advice is made to predict outcome using the test dataset in subsequent phases. सुपरवाइज लर्निंग की हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आप एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि ये गाय है और ये बकरी है। अब उसको कैसे पता कि ये गाय है और ये बकरी है? आप उसको उसकी तस्वीर दिखाते हो, गाय की तरफ इशारा करवाते हो कि ये गाय है और बकरी की तस्वीर दिखाते हो, सेम ऐसे करते हो कि वो बकरी है। ठीक है। अब जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बकरी गाय, ठीक है, वो आपकी आउटपुट हुई और वो जो हमने इमेज दिखाई उसको, हमने उसको एक व्यू दिखाया, ठीक है, वो हमारी इनपुट हो गई। अब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या है जी? कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रेफर्स टू अ लर्निंग टेक्निक दैट डिवॉइड ऑफ सुपरविजन. Here the machine is trained using an unlabeled dataset and is enabled to predict the output without any supervision. An unsupervised learning algorithms aim to group the unsorted dataset based on the input similarity, difference and patterns. अनसुपरवाइज में क्या होता है जी कि हमारे पास इनपुट तो होती है लेकिन आउटपुट नहीं होती हमारे पास। ठीक है, हम इनपुट देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्रूट फील्ड कंटेनर है, ठीक है, उसकी हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। अब वो मशीन है, उसको नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। तो वो ये अब क्या करेगा जी कि हम जब इनपुट देंगे, ठीक है, उसको हम तस्वीरें दिखाएंगे, ठीक है। अब वो जो मॉडल है, जो हमारा सिस्टम है, वो आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सच एज कलर, शेप और डिफरेंस सीन इन दी इनपुट इमेजेस, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा इमेजेस को, उसमें डिफरेंस सीन करके, ठीक है। तो उसके बाद वो कैटेगराइज कर देगा उसको, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन. Basically, clustering is the most important technique of unsupervised machine learning. जो के मीन्स क्लस्टरिंग है वो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है. के मीन्स algorithm is a technique which is used to cluster data points. What is clustering? So clustering is a set of techniques used to partition data into groups or clusters. Clusters are loosely defined as a group of data objects that are more similar to other objects in their cluster than they are data objects in other clusters. In practice, clustering help identify two qualities of data, which is meaningfulness or usefulness.
So meaningful clusters expand domain knowledge. For example, in medical field, researchers applied clustering to gene expression experiment. The clustering result identified group of patients who respond differently to medical treatments. Useful clusters. Useful cluster on the other hand serves as an intermediate step in a data pipeline. For example, business use clustering for customer segmentation. The clustering result segment customer into group with similar purchase histories, which business can then use to create targeted advertising campaign. So now understanding the conventional k-means requires only a few steps. The first step is randomly select k centroids where k is equal to the number of clusters you choose. Centroids are data points representing the center of a cluster. The main element of algorithm work by two-step process called expectation maximization. The expectation step assigns each data point to its nearest centroid. Then the maximization step computes the mean of all the points for each cluster and set the new centroid. Here what the conventional version of k-means algorithm look like. So specify the number k of cluster to assign randomly initialize k centroids. Repeat expectations, assign each point to its closest centroid. Maximization, compute the new centroid mean of each cluster until the centroid position do not change. The quality of cluster assignments is determined by computing sum of sequenced error (SSE) after the centroid converge or match the previous iteration assignment. The SSE is defined as the sum of the sequenced Euclidean in distance of each point to its closest centroid. Since this is a measure of errors, the objective of k-means is to try to minimize the value. The figure below shows the centroids and SSE updating through the first 5 iterations from 2 different runs of k-means algorithm on the same dataset. तो ये देखें फर्स्ट पिक में आइट्रेशन 1 है, ठीक है, तो ये आइट्रेशन 2 हो रही है के मीन्स आइट्रेशन 2. लेट्स मूव ऑन. सो ये देखें आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4 एंड आइट्रेशन 5. तो लेट्स मूव ऑन. The purpose of this figure is to show that the initializing of centroids is an important step. It also highlights the use of SSE as a measure of clustering performance. After choosing a number of clusters and the initial centroids, the expectation maximization step is repeated until the centroid position reach convergence and are unchanged. The random initialization step causes the k-means algorithm to be non-deterministic, meaning that cluster assignment will vary if you run the same algorithm twice on the same dataset. Researchers commonly run several initialization of entire k-means algorithm and choose the cluster assignment from the initializing with the lowest SSE. So thank you so much. Let's move on implementation. जी तो आप देख सकते हैं जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम, तो लिहाजा इम्प्लीमेंटेशन किस में करेंगे, जुपिटर ऐप में करेंगे. तो जुपिटर ऐप के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपके पास एनाकोंडा ऐप ज़रूरी हो.
तो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप पहले इसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ मैं, तो लिहाजा ये फ़ाइल रीड कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली एक्सेल फाइल है जिसको रीड करते हुए ये कोडिंग कर रहा हूँ। तो ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। Sound like a spirits, I'm murdering my lyrics. Sound like a spirits, I'm murdering my lyrics. Give it to me like होप सो दोस्तों आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।